well on a scale of 5? Good evening, sir. Radio 5. Charlie Hotel Alpha. Good evening, sir. Radio 5. How do you read? Reading both stations, 5. Very good. So let's see a couple of minutes if anyone else is joining. Important thing to be done today. I think you know what's going to happen. If you don't know, let me tell you. I'm going to give you your surprise test. And the test is obviously going to be based upon all that we have done till today in couple of days or in couple of sessions from the past. One last time, I'm asking you if you have any questions, let me know. The reason I'm not giving the test directly, I thought I'll meet you first and give you a brief is because if you have any last minute doubts, you could discuss those with me. The doubts with respect to application of 1/60, all the variety of applications, be it VOR, DME, in-flight navigation, TMG, tri-career angle, glide slope, glide path. If you have any questions, feel free to ask. Do your final revision. Some questions that you had done in the assignments, similar questions could be asked. Okay. And I'll be sending the test to you in some time and you'll be doing it and sending it back. Before that, see if you have anything to discuss. I want you all to get me 100 on that test. I'm not going to give you any questions in the session. I'll directly give you the task because everything, all final prep we have done. So go through your notes, go through the topic in your mind. What is there? What kind of different situations could be given to you where you could be making a triangle and finding an angle or height or an adjacent. It could be with respect to something called your QFE reading. Now, QFE reading is your reading height vertically above the ground. When your reference for height measurement, the pressure reference is the pressure from the airfield elevation only. So do not get confused. QFE, QNE, QNH. Vertical distance would be measured either from the mean sea level, either from standard atmospheric level of 1013.25, or from the airfield elevation. Only 3 options you will get always. Most of the times with respect to glide slope, QFE means your vertical height from the ground itself, nothing else. It still follows that formula. Okay? Be very careful with the language. Jyotsa, Muskan, Prerit, Rohita, Chaitanya. See if you have any doubts. Suchita is not here. Krishma is not here. Afterwards, if you don't score well, then it will be an issue if you don't score doubts right now. Don't discuss doubts. I'm not saying forcefully create doubts. Okay? That's not going to happen. You don't have to forcefully create doubts. Suchita, how do you read? Welcome to the class. Radio 5, sir. Sorry, sir. No, that is okay. You are going to be given a test right now. Please revise. I'm just here to discuss with you all pre-test if you have any doubts or are you thorough. I'm hoping you'll give me 100% on the test, and the test is based on 1/60. So those are the instructions I was giving. Please sit down and see if you have anything students discuss with me right now. Again and again saying the same thing. I'll be giving you the test in a few minutes. I'm giving you this time to discuss, okay? Or doubts, whatever the case are, whatever the case is. Remember, I did mention something about QFE. What is QFE? QFE will mean vertical height above ground only. While landing below the transition altitude, generally you get something called QFE only.
Sir, in cross-tracking, whether we'll find airway thing or RMI indicates. What about cross-track? Rohita, say again. What do we have to find? I could read you three. Say again. We have to find how much, which is the center line of the airway from the aircraft. Uh-huh. So we have to find. We have to find RMI or the VR indicate aircraft. What the aircraft VOR indicates is your actual track, the track that you are on. It could be the airway centerline, it could not be the airway centerline. What the airway RMI or the airway QDM is, that is the airway centerline. So if they say your required track is 150, then that becomes your airway centerline, 150. So if I say airway QDM is 150, then with respect to that VOR, the QDR line 150 with respect to QDM 150 becomes our airway centerline. And what the aircraft VOR shows is my actual aircraft. So my aircraft could be right or left. In different words, I can also say aircraft VOR indication could indicate something like a track made good, but with respect to a fixed radial with respect to the VOR, while the CDI needle or the airway QDM or the airway QDR for that matter could be your airway centerline. Remember this, okay? If nothing else, then your required track is your airway centerline. Yes, sir. Chaitanya, you had some confusions yesterday. Okay, Vishnupriya is also not here. See if you have any doubts. Chaitanya, आप कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हो? Sir, none as such. I like the confidence, but हम जब solution कर रहे हैं तब mistakes आती हैं. तो देखो कहाँ पे कोई mistake होगी, अभी भी मौका है, check करो. Sir, If you- sometimes I confuse in understanding the question. That's what the problem I think I'm facing. Yes, everything is going good. Oh, understanding the question, what is the strategy? Sir, What's the I strategy think to avoid that? practice will improve. ऐसा नहीं होता है ना. प्रैक्टिस से तुम्हारा क्या मतलब है? Like I'll do more and more questions will. अब जब क्वेश्चन ही नहीं डायरेक्ट समझ आ रहे हैं तो उसी मेथड से बार बार क्वेश्चन करके क्या फायदा? आंसर तो गलत ही दोगे ना तुम. मैंने ये स्ट्रैटेजी बहुत पहले दी है, आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो? Students, what's the strategy when the question is confusing or when you're confused about the question? Who can tell me? What is the strategy to not get confused with the question? कितने बहुत पहले ये चीज आपको बताई गई है, किसको याद नहीं है? ठीक है, किसको याद है ट्राई करो बताने का मुझे. What is the strategy to ensure you're not confused by the question in navigation? No one? कोई हाथ उठा रहा है क्या? I cannot see. Suchita, can you please explain? Chaitanya, please ध्यान से सुनना. And then after Sir. Suchita, Muskan, and after Muskan, Rohita. I have three answers to this, one by one. Yes, Suchita, you go ahead first. Yes, sir. So, sir,
Firstly, we'll read the question twice and focus on the keywords and then go about solving the question. Read the question twice and focus on the keywords. Chaitanya, are you doing that? Hi, bolega Chaitanya. Yes, sir. Chaitanya, are you doing that? Sir, I think I'm doing it. You think नहीं होता है. Do you do it or not? लग नहीं रहा है. Second, Suchita, sorry, thank you. Rohita, what was your point? After reading the question, we have to join the dots. Join the dots. Similar to what Suchita is saying, focus on keywords. Very important. What do you exactly mean join the dots? If you would give me an example in your own way. Question will be in multiple ways, sir. So by taking one point from the question, we can get the answer. Mm-hmm. Okay. Muskan, what are you saying? Sir, if we are not understanding the question at the last, so we can do reverse calculation. If something we know about it. Reverse calculation can also be done in a tricky situation when you don't really know much. That is also one of the techniques we can use. Okay. Jyotsna, how about you? So it's read the questions twice and try to solve the question from the options given also. Try to read the question twice. Very good. And you can always try to resolve using the options in the question as one of the elements in whatever equation you are solving or whatever relationships you are discussing. Fine. Good. Fine. We know the generic points. Are we actually using them? Let's find out. Chaitanya, if you think your problem or confusion or mistakes are coming across because you are not reading the question properly, then from where I see it is a fatal error. It is an error that is applicable to all topics. It is not an error related to one topic. If it would be an error related to one topic, we could think, okay, there's one topic that you're confused with. So that is something that is a weakness. Then we could focus on our strengths. After having given exams, after having studied so much, after having cleared other exams, after doing so many subjects, why do you think a silly error like reading the question not properly or not understanding the question properly is an issue? Or do we not understand English? Or have we not studied all the elements involved in aviation? You know all the elements, you know good English, you're smart, you have street smarts. Then what is the problem? Why are you not reading the question properly? Or why is the question confusing to you? Why you're not understanding the question? So you look at the question, you look at the options, you do some calculation, you get an answer. If I'm not giving you options, you will give me some answer that could be wrong. If you have options and if your answer doesn't match, then you will be stuck. You'll not be in a state to give an answer also. The best you could do is to give me an answer closest to that question. But you don't know if it's right or wrong. And the problem is that the problem will be applicable to all questions. You might not understand any question from any area. So what type of questions do you not understand? That is the criteria here. I'm sure you will understand a question where I give you 2 points, 3 points. Probably you're not understanding a question where there are many things. Like yesterday, I remember you saying, sir, bahut kuch hai. Just because you have extra elements, probably that might be triggering a confusion in your mind. So that's why we read the question twice. We focus on the key points. We connect the dots. These 3 things are actually the way we do it. Actually said by everyone in unison and something that you say, sir, मैं तो करता ही हूँ. शायद आप अच्छे से नहीं कर रहे हो. शायद आप शॉर्टकट में ले रहे हो. शायद कुछ क्वेश्चंस को आपको अलग से करना होता है, कुछ क्वेश्चन को अलग से करना होता है. आप सेम क्वेश्चन रख रहे हो. कुछ भी हो सकता है. You have to keep the most difficult approach as your primary approach. The most difficult thing to do should be your primary thing to do, so that other things are very easy for you to do. और तुम्हें क्या इश्यू लग रहा है बताओ मुझे जल्दी.
Right now, one way you can resolve is just read the question twice. Gather all the elements together. Don't jump to Assumption. solve. Don't jump to solve. Take your time. Do not worry about the time. You gather all elements, understand okay, QDM, QDR, track error angle, or difference in my required track made good, range, or maybe how many nautical miles off track. If you gather all those elements, only then you can figure out, okay, I want to do 1/60, and this is how I do it. Students, one thing that I talk about when I'm talking about how to not get confused with questions is let your mind think about the situation with respect to you giving all the elements. Read the question twice, focus on the key points, connect the dots. Let your mind show you things. Don't force your mind. Your mind will show you, okay, this is this is that. Look at the options and then understand. I don't generally look at the options when I know I have to solve and come up with the answer. So that's pointless to look at the options before solving also such numericals. So what do I do when I get the numericals? Instead of hunting for the question, I hunt for a situation explanation as to where is my aircraft? Where is the ground station? Where is the required track? What is my heading? These are the four things only that you need to sort out. Where is my aircraft with respect to the ground station? Whether I have a RMI with respect to that, do I have a QDR or QDM? Do I have range? Where is my required track? Am I on the required track? That's it. Getting it, students. That's it. It comprises of all the 4 and 5 different elements or different applications of 1/60. Think, students, what else? अगर चैतन्य सिर्फ क्वेश्चन रीड करने में इश्यू है तो कोई बड़ा इश्यू भी नहीं है वैसे अगर इसको फिक्स कर लिया आपने तो आप सेट हो फिर तो प्लीज थोड़ा मेहनत करना आप मेहनत नहीं करोगे और बोलोगे मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा एंड इफ यू डोंट डू थिंग्स डिफरेंटली then you might not feel that you're improving. Doing things differently is the way of improving or not improving. Going downhill or uphill. So if you do good things, new good things, you're going uphill. If you do new bad things, you're going downhill. If you don't change anything, then you are stagnant. In the stagnant, we are not at peak. So why to be it stagnant? You be stagnant when you are at peak. So being at the top, if you are stagnant, you're still at top. But you have to do it. It will only happen through you, no matter how many times you put it on someone else. आपसे ही होगा आपको हेल्प मिल जाएगी आपको कैसे करना है और मिल रही है उसको आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा देन आई हैव टू सिट ऑन योर हेड लाइक ratatouille and hold your hand and make you do things which is not practically possible. दिमाग से आपको ही करना है वो आप नहीं करोगे ना स्टूडेंट्स तो कोई नहीं करेगा और जो लोग करते हैं वो लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं लाइफ में क्योंकि वो लोग को सिखाया जाता है ये सब वो लोग के पीछे बहुत लोग होते हैं उनको सिखाने वाले बचपन से कुछ लोग होते हैं जो खुद से सीखते हैं ये सब and there are some people who understand only a few things on their own and are taught only a few things by others so they are stuck. आपको बेस्ट मिल रहा है ना उसका फायदा उठा लो ठीक है एनी मोर क्वेश्चंस थिंक think 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 चैतन्य और कुछ समझ आ रहा है कोई कुछ डिस्कस करना है आपको with respect to formulas with respect to Q codes with respect to directions anyone no points so shall I prepare you to appear for the test are you done are you thorough everyone Yes, sir. चलो गुड एवरीवन में सिर्फ चैतन्य बोल रहा है ओके अदर्स लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी let me know
Suchita, any questions? No, sir. Okay. Muskan, Negative, sir. Rohita, any questions? No, sir. Jyotsna, any questions? Negative, sir. Mm-hmm. Okay, students, all the best. Right now, stay connected to the session. Okay. Once the email is sent to you, I'll just say it's sent to you. I'll give you a time limit. Within that time limit, you submit the test, and then you can leave the session. Okay. And although generally we'll do tests in future with the videos on, so we could see you're studying, but right now I don't want to do that. I trust you all. So no open book, no nothing right now, just based on your memory, no notes, nothing, as if you're giving the exam or the test in the examination center. I'm not going to instantly send it to you. I might put in the surprise element, maybe 5 minutes, 10 minutes, 7 minutes. So be on the lookout and just be here, okay? If you have any questions, drop me a message on Zoom chat as well as on WhatsApp in the meantime, or just raise the station, okay? Chalo, be ready, okay? You can close your books, your revision books and everything. Just sit idle with 1 by 60 in your mind and general lab overall in your mind. You might get a couple of questions from outside also. You don't want to get that wrong. Okay? Sure. I'm also going blind now, okay? I'm here, but I'm going blind. I'll announce when the paper is sent verbally. Once I'll do that, okay? So be on the lookout. At least 5-7 minutes you have free. If you want, you can take a refresher.
Okay, students, is everyone here? Chaitanya, Sir. Prerit, Affirm, sir. Muskan. I think Muskan is not here today. Rohita, Affirm, sir. So I'm here. okay, Muskan, Jyotsna. Jyotsna, are you there? Who am I missing? Muskan, Jyotsna, okay. Rohita, 3. Prerit, Chaitanya, 4, 5. I think I'm missing one student in class. There. Sita is there. Okay. Mm. Okay, we are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vishnupriya is here. Vishnupriya, how do you read? Very nice to see you join. Vishnupriya, are you well versed with 1 by 60? I'm sending you all a test. Are you ready to do it? Do you have any doubts? What's your status? कब आए आप पता ही नहीं चला मुझे, but very happy to see you. So students, no open book, and please set a timer on your watches or put your phone on focus mode, and you can set a timer on your phone and set a timer for 20 minutes and start the timer when you get the question paper. The question paper is via Google Forms. So you will get to know your result. You will get to know the correct answers. You have to ensure you go through the correct answers, check your wrong answers, figure out the mistake, then share with me why you had how many wrong and were you able to fix it. If not, then that would be our subject of discussion in the next live class before we start with the next topic. I hope you're understanding. If it is wrong and if you're not doing some research by your end to fix it, if you don't struggle to find the correct answer, then you are not following the way you have to prepare. समय गलत आ गया मेरे को नहीं पता आप बताओ. That will be after you trying to find a mistake by yourself. The whole agenda of training you this way is that you are able to find a mistake if you know that, okay, ये मेरा गलत था, ये सही था, ये सही कैसे आया? Try to spend some time on that question. Afterwards, that is the final step of learning. When you are spending the time with that wrong question to fix, you go through your notes, you go through the text. And then also, if you don't know, then put that in the parking lot and keep it shared with me. That's this question I tried, but I don't know. Please show. You know, when I'm showing you, I'll still ask you, did you do this? Did you do this? Did you do this? I'm not going to directly give you answers because I want to see which step of the point you missed. Thankfully, this is beginners level practice test, and there will be another test, a final test for these topics, a surprise as you go ahead. That will have more of complicated questions. But good for you, you have at least 1 or 2 of them in this. Okay, 20 minutes. Any questions? I'm sharing it now. The moment I sent it, please be in the session. Once you have submitted the answers, you can leave the session. Simple. I'll get to know whose question papers have been submitted, who's not, and I'll get your answers directly the moment you submit it. So I will know it. It's just that you have to do some R&D on that. Discussions we'll do in the next session only, not now. So you'll get some time to do that R&D. So post the question paper, you don't have to do much with me. Just have to observe and learn and take it ahead in your own way, and feel free to have discussions with me like if you want to. Okay, the simple instructions. You have to follow these instructions. See, I'm emphasizing so much. This is your first test. Things are going to be like this. Sometimes this, sometimes that. It's very important you follow instructions. Okay. Where's the timer? 21, right? Okay. So I'll give you grace
5:45 will be the maximum time you have to submit it. In case you are not able to submit it, just track it and then submit it as quickly as you can. I want 100% accuracy. Although the timer is there, you will be allowed to spend extra time. So timer you are setting just for your sake. I'll be expecting all answers by 5:45. There are 15 questions in total. Okay. Passing, is 70, but I'm expecting 100. So you need 11 correct answers, basically. Okay. But I want you to have 12, 13, 14, 15. Well, all the best. Submit. Do well, okay? Very simple. Nothing that you have not seen in the past. Got it, everyone? Whoever's not got it, let me know. If you've got it, you can start. I'm starting the timer as well. For me, the timer is still 5:45. Chalo, all the best, students. I'll see you. Tomorrow also, same time for navigation, pre-assumed, okay? Unless otherwise specified. If the session is rescheduled or postponed or just skipped, you will be informed. But 4:30 is our time for tomorrow also. So remember that, okay? Sir, I have not got now. Sorry? Sir, I have not got the test. Sir, I also didn't receive it. आप लोग स्पैम में चेक करो, प्रमोशंस में चेक करो, प्लीज चेक करो. 1 मिनट लगेगा शायद पहुंचने में. Yes, I received it. It was in promotions. Yeah. Chalo, all the best. Okay, I'll see you. Submit it by 7:45. 1745, not 7:45. Chalo. All the best, students. Shanti se karo, no open book, okay?
Okay, students, I think your time's up. 1 last minute left. Vishnupriya, very good. Got your submission on time. Excellent. Whatever feedback you have, please share over text if you have anything. How was your experience? Ek feedback लिख दो. Good, bad, whatever. And good score. Congratulations. कुछ भी confusions होंगी parking lot में लिख के रखो. We'll be doing in the next session. Until then, you have to do some R&D on those confusions. Remember that. And we are meeting tomorrow 4:30 again. So yeah, unless otherwise informed. I was not expecting even one, but ek aa gaya. I'm very happy. Chalo students, basic time is done. Let's see now how much you exceed on the time. It's okay. Don't rush. Right now, the correctness of the answers should be your priority. On the same topic, I'll be giving you another test, a lengthier test. Okay, only then we understand, okay, where do we stand and can we move ahead on the next topics. A little bit of journal navigation will also be merged with that. So probably I'll be giving that test to you tomorrow. Similar questions will also be there. Probably the same questions could also be there, part of that larger test. That'll be easy for you. Muskan, I've received your paper. Just 1 minute behind, as good as 5:45. Very good. Excellent. I can see you all have studied this thoroughly. With your scores, I can understand it's thorough. The final thing would be trying to solve variety of questions. That's it. And still maintaining 100%. That's all we need to do. Chalo, bahut acha hai. Start revising other things also, students. If you're going to appear the exams anytime, है ना, free time रहेगा, अपना जो हो रहा है सब हो गया है, so feel free. Jyotsna, very good. Excellent. 2 minutes. It's fine. Good job. Remember the instructions for the exercise. Okay, students who are done, you can leave. Congratulations. Very happy to see your scores and remember the instructions, how we have to go about it. I'll see you tomorrow live and as per whatever instructions you get for the other schedule, in case you do attend that. So Jyotsna, Muskan, and Vishnupriya, congratulations. And if you're done, you can feel free to leave. No problem at all. Excellent. Do give me your feedback over text, okay, students? Whoever is done. Bye. Experience is good. Great. Rohita, Prerit, Chaitanya, Suchita, waiting for you. And Muskan, waiting for your feedback. I'm sure you must have sent on WhatsApp. WhatsApp पे भेज दो, better रहेगा. Test feedback. Sure, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Most welcome. Well done. Keep it up.
स्टूडेंट्स, आप अगर तकलीफ में हो, आपको स्ट्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इवेंचुअली यू विल बी डिस्कसिंग दैट विथ मी, ओके? इवेंचुअली. So in case you're not getting good scores, now as a good reality check. Okay. Once we have the reality check, we have real plan and course of action design. And it's okay if you don't score even 10-20%. There's still time to cover up. So do not panic, okay, in case that is going to happen with you. Just hold on. Students, come on, time's up. 5 मिनट एक्स्ट्रा कॉइन मिल गया, बहुत है. Sir, I have also submitted paper. Yes, Prerit, just received yours. 551. Good job. Well done, yeah, Prerit. Very happy to see your score. टाइम क्यों लग गया इतना? टाइम पे क्यों नहीं हो पाया? बस जो टाइम दिया था उसमें क्यों नहीं हो पाया? सर एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था सर, 10th वाला क्वेश्चन वो रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो फिर जो समझ में आया फिर उसी में कर दिया. हम्म. हम्म. कहीं ना कहीं सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमने पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं आपको रिकॉल हो ही गया है. कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड जॉब. प्लीज अपना फीडबैक मैसेज पे लिख दो मुझे, ठीक है? यू आर डन, यू कैन लीव. वेरी सर गुड. Rohita, I've got yours also. Very good. I'm very happy with your score. I'm not going to ask you why delay, whatever, because I know you've been practicing and you are practicing now. But do give me your feedback in your own opinion. And if there are questions wrong, then try to figure it out. Try to do some R&D. Wherever you reach with respect to your research on that, in the next session, share with me and be ready to discuss. Simple. If you can figure out your mistakes on your own, that is the greatest thing. You should keep me in the loop. If not, I'm going to help you do that, and then you'll figure out it on your own. This is for everyone. So well done, Rohita. Do give me your feedback with respect to the Yes, sir. experience of test on text. Give me WhatsApp text. Okay, sir. And you can also leave. Thank you, sir. Most welcome.
Chaitanya, Suchita, come on. You have to push through. You won't get time. You have to submit. You have to come to conclusions. पूरा पेपर नहीं छोड़ सबमिट करेंगे तो कैसे चलेगा? Make the call wherever you are confused. 3-4 options. Come on, do it. 10 minutes up, over and above. So you've got 2 minutes for every question. If you take 30 minutes for 15 questions, we generally get 90 seconds. Just saying, it's not that hard and fast because some questions you'll get in 5 seconds. So you get that buffer time a lot. But still, my target was, my practice right now was lesser than 90 seconds for you. 20 minutes for 15 questions is less than 90 seconds. 22 minutes, 90 seconds. So I give you a buffer. So 25 minutes tak theek hai. 22, 25. तो आज जो हम फील कर रहे हैं वो चीज़ों पे हमें काम करना, धीरे धीरे हर टेस्ट पे फोकस रखेंगे हम ताकि एग्जाम्स में ऐसा ना हो. Because these are the things that we have studied and we have restudied and we have revised and we have resolved, and the questions are similar to the ones I've given you all in assignments and in class. So comparing to that, we should be able to do it in a quicker time. आज नहीं लेकिन next test में तो performance दिखना चाहिए. So come on, submit it. Chalo, I'm giving you last 4 minutes. You have to submit it by 6 o'clock. I get timestamp what time you're submitting. No problem, just for tracking. कोई डांट नहीं पड़ेगी. And once your test is done, share your feedback with me, okay? Over chat. And please work on your areas of improvement, if there are any. Okay, Suchita, good job. Got your submission. Work on your mistakes if there are any. And after your work is done, discuss with me in the next session. But yes, before that, do give me a feedback on your test. Very happy with your scores. Congratulations. Why do you think you took that extra time? Please talk to me about it. So, in one question, I got confused regarding how to find, like, the question was not direct what has to be found. So, in that question, then. Which question? So, it was second, I guess. Okay. And then one more sum was there regarding the light slope. Question number 10. That also, I actually don't understand that question. I just marked anything. So you'll have to go through your notes, revise well that part. It is
somewhere mentioned to the direct formula for glide slope. So it is discussed for a 3-degree glide slope, and ROD is something into the glide slope. That statement is directly given. Here Z represents the glide slope. And what is that value? Glide slope into what gives me direct ROD for every nautical mile. So the keywords are very tricky in that point. If you read the question number 10 carefully, we tend to take the last point, feet per nautical mile, for granted. And this is a very, it's a question that not everybody will know how to answer, because ROD, feet per minute, everybody knows. But ROD, feet per nautical mile, not everybody knows. This is a point we have discussed, but point that generally tends to be ignored or taken for granted. So the technique is very simple. Chaitanya, you also focus on this. Feet per nautical mile for a 3-degree glide slope, multiply the glide slope by 100. Even if your glide slope is 2.5, you can do that. 100 into 2.5, you get 250 feet per nautical mile. That is an easy way to get ROD for the last nautical mile. Remember that. That is taught to you all. Maybe you have missed it, but that is a direct thing that we get, a good thing, basically. Yes, sir. Now I recall it. Yes. So that's the key point. That's the variation which we don't refresh much and revise much, because of which we are unable to recall it. Because generally feet per minute, slightly feet per nautical mile is given. So such things we need to be more aware about. Simple. And sir, I was not able to remember the formula for ROD, but somehow I came to it. Very good. Very good. So we can say that somewhere our revision needs to be strong with respect to direct concepts. As in, you did think and come to a conclusion. You should have Yes. directly been able to come to a conclusion. Second level of mastery of the subject. With what you have done right now, thinking and doing is actually mastery. That is good. Now you can say with practice, you will become fast, or maybe developing couple of skills to become fast. Maybe reading the question properly, or maybe devising your own strategy how to read it. But it is good, it is not bad. With whatever complications you faced, if this is the score you're going to score, I'm happy with it. Just focus on whatever questions are wrong and see why, how could you have prevented to not get it, to get the correct one? Why did you get the incorrect one? Should you have got the incorrect one? Is it a silly mistake or is it a random guess? Those are the things you should talk, you should think, and then discuss in the next session if there is a discussion. But good. So if you have 3 confusions, you have 3 points to do your diagnosis on this and get back to me. Simple. Yes, sir. Very happy with your score. You're going in the right direction. I'm concerned you should not even lose 1 mark. Let's focus on that now. Okay. I got that answer right, but rounding off, I knew the answer, but I thought that I'm using feet as 1 nautical mile as 600 feet. So, and in the CX3, I did not knew the like what value are they using. So I got confused there, and I thought maybe 600 feet. So if the CXC is using 6080, so maybe my answer should be I should round it off to the lower value. So I rounded off to lower value, but it was supposed to be rounded off to the higher No, value. so don't assume that assumption. It was a good assumption, but CX3 generally will not take 6080 also. Why, students? Because again, the value is different at different latitudes. So CX3 might be taking the accurate values also. We don't know. With respect to latitude, longitude put inside. Or maybe just 6000 or maybe 6080. But yeah, good. अगर क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट 600 लेना है तो आप 600 लो. नहीं दिया है तो आपको जो नैव कैल्सी में मिल रहा है वो लो, उससे मैच करके देखो. उससे नहीं हो रहा है तो 6000 से मैच करके, क्योंकि 2 ही ऑप्शन हो गया आपके पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा. या तो राउंड ऑफ ले लो 6000, वन नॉटिकल माइल इज 6000 फीट, or CX3 based. CX3 based will be 6080 feet only. Generally, we can say that. But issue नहीं आएगा. आप दोबारा से solve करना with respect to different approach. You will see you will be able to mark the correct answer. अपने आप समझ में आ जाएगा आपको. बट ठीक है, ये सब के बारे में अवेयर रहना है, दोबारा से मिस्टेक्स नहीं आनी चाहिए. ठीक है सुचिता, डू वर्क ऑन दिस एंड शेयर दैट, एंड टेक्स्ट पे मुझे एक फीडबैक दे दो टेस्ट का. Okay, sir. चलो चैतन्य, गुड जॉब.
6 o'clock यू आर एबल टू सबमिट, वेरी गुड, जो आपको फाइनल ग्रेस टाइम मिला एंड गुड स्कोर, पासिंग स्कोर किया है, आई एम वेरी हैप्पी। तो जो भी गलती हुई है प्लीज उस पर थोड़ा करो R&D, एंड यस सुचिता बाय, एंड नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग इफ देर इज अ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट नहीं है मतलब जो 4 क्वेश्चंस गलत है आपको पता चल गया वो क्यों गलत है। बस मुझे एक चीज बताओ चैतन्य, इतना टाइम क्यों लगा आपको? बट आई एम हैप्पी आपने 6 बजे सबमिट किया, सो क्रेडिट टू यू। बट 15 मिनट कैसे लग गए एक्स्ट्रा, कहाँ थी कंफ्यूजन, क्विकली बताओ मुझे। Sir, actually, I did 3 questions, then the link got refreshed. Then I had to do it again. That's what I. मुझे बताओ जो 4 क्वेश्चंस गलत हुए हैं क्या हो गया, गेस वर्क करा है कि सॉल्व करके करा है? Sir, जो 10th क्वेश्चन है उसमें गेस वर्क कर रहा है। गेस वर्क अलाउड नहीं है चैतन्य, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जहाँ गेस तो वर्क वो करना पड़े। सब पढ़े हुए क्वेश्चन ही आया ना कि कुछ बाहर से आया? sir 10th one I'm not able to understand what is it. सॉरी, The 10th one I was not able to understand what is it. अभी समझाया ना मैंने, सुचिता को बोल रहा था, अभी बोला ना चैतन्य यू ऑल्सो फोकस, नहीं सुना नहीं सर, क्यों? I was just scrolling. सर मुझे, सर आपने ये नहीं बोला मुझे। मैंने बोला चैतन्य आप भी सुनो, दोनों के लिए है। आपके लिए नहीं होता तो सुचिता को बोलता ही नहीं, मैं कल बोलता, मुझे पता था आप भी उसी पे स्टक रहोगे। वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हो, कितने दिन हो गए, सुन भी नहीं रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? मुझे तो लगा सुन रहे हो तुम। मैंने दे दिया एक्सप्लेनेशन पहले ही, तुम्हारा डाउट आने से पहले ही एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं। अब क्या करूँ मैं? क्यों नहीं सुनते हो यार? क्यों नहीं सुना चैतन्य? क्लास में बैठे हो, लाइव चल रहा है, हर बच्चा सुन रहा है, क्यों नहीं सुना आपने? सर बस वही पार्ट नहीं सुना, बाकी सॉरी, सर बस वही पार्ट नहीं शायद सुना, बाकी I have done. ऐसा कैसे पता चलेगा चैतन्य? कितनी इंपॉर्टेंट चीजें तुम मिस कर जाते होगे ऐसे रहा तो। मुझे नहीं समझ रहा है, तुम वीडियो भी नहीं ऑन कर रहे हो, तुम सुन भी नहीं रहे हो, और तुम फीडबैक देने लगे हो थोड़ा बहुत, वो एक अच्छी चीज़ है, बट सुन नहीं रहे हो और मेरे को पता भी नहीं है तुम क्यों नहीं सुन रहे हो, बिकॉज वीडियो इज ऑफ। आई हैव नो अदर वे टू वेरीफाई आप पढ़ रहे हो कि नहीं। आप क्लास में बैठोगे और क्लास खत्म होने के बाद चले जाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है पढ़ाई होगी। फिर क्या करेंगे? कितने ही सेशन ले लो, अगर तुम हर सेशन में वैसे ही पढ़ोगे तो फायदा कैसे होगा? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे फोकस में हो सकता है, तुम्हारे रिसेप्शन में हो सकता है। फिल्ट्रेशन कहीं खराब हो रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ उसी पॉइंट पे। कोर एरिया एरर क्या है, कोर उस पर अभी भी काम नहीं हो रहा है शायद। व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? डिस्ट्रैक्शन है, इंटरेस्ट नहीं है, या कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल्स ही गलत पढ़े हैं कि आपको यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन हो रहे हैं? आई एम नॉट श्योर। तो आपने जो गेस वर्क किया है वो आप दोबारा से सॉल्व करोगे फुर्सत में। दूसरी चीज, जो 4 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग आए हैं उस पर आई वांट योर रिसर्च, एंड आई वांट यू टू टेल मी वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट, एंड वेदर यू अग्री, वेदर यू आर एबल टू फाइंड योर मिस्टेक्स और नॉट। तो तुम्हारी Affirm sir. मिस्टेक्स क्या है उस पर आप थोड़ा मेहनत करो, ढूंढो और मेरे से चैट पे डिस्कस करो, मुझे कुछ तो चाहिए डिस्कशन, आए हैं नहीं आए हैं, ताकि कल जो नेक्स्ट सेशन हो उसमें मुझे पता हो कि मेरे को एक डिस्कस करना है, 2 करना है, 3 करना है या 4 करना है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जी सर, I'll do it. बट तुमसे होगा नहीं होगा? आई एम हैप्पी पासिंग सर ले आए हो, बट बफर नहीं है हमारे पास यहाँ पे, मुझे कम से कम 13 चाहिए, 14 चाहिए 15 में से। 11 पे रहेंगे तो एग्जाम में टफ हो जाएगा हमारे लिए। बट पहला टेस्ट है, बहुत अच्छा है, 11 स्कोर किया आपने। 11 से नीचे किसी ने स्कोर नहीं किया, सो आई एम हैप्पी, बट ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 11 आउट ऑफ 7, वन हैज स्कोर्ड 14, रेस्ट एवरीबडी हैज स्कोर्ड 15। तो तुम क्यों नहीं 15 ला पा रहे हो जब सब ला पा रहे हैं? तो आई कंसिडर यू टू बी अ लिटिल मोर स्मार्टर देन अदर स्टूडेंट्स, तो फिर आपके पास क्यों मिस्टेक हो रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी फिगर आउट कर लो, ताकि नेक्स्ट हम आगे बढ़े ना, तो आगे जो भी हम फाइनलाइज कर रहे हैं, कोई नई चीज पढ़ रहे हैं या कोई चीज मास्टर कर रहे हैं, सब 100% रहेगा।
अगर अभी ये नहीं फिक्स करोगे ना, आप 70 पे रहोगे ना, तो बेचारे जून में फिर क्या होगा ना, 65 67 पे रह जाओगे तुम। मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, तो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ कि तुम इन चीज़ों पे काम कर लो, सिंपल चीज़ें हैं, तो आप अच्छे स्कोर ले आओगे बस। अच्छा स्कोर चाहिए ना हमें, 67 भी अच्छा ही है, बट एग्जामिनर को तो अलाउ नहीं होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा ना 67 पर टू पास यू। उनको तो 70 अबाउ सब सही लगता है ना। तो ओवरऑल गुड, बट नेक्स्ट टेस्ट आई वांट यू टू स्कोर इन 80s एंड 90s एंड ऑन टाइम। तो प्लीज फॉलो। अकाउंट से। देख रहे हो तुम्हारे कौन से गलत आए हैं। बाकी अच्छा किया तुमने, जो 11 सही आया ना। और 11 में से कोई गेस वर्क था या सब सॉल्व करके लिखे हैं? 10th वाला गेस था। 10th वाला। वो अभी भी मैंने गलत हो गया। बताया, 10th वाले क्वेश्चन को रीड करो। आरओडी का यूनिट क्या पूछ रहे हैं, फीट पर मिनट पूछ रहे हैं या फीट पर नॉटिकल माइल पूछ रहे हैं? 1 सेकंड था। कितने? ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि सर नॉटिकल माइल पूछ रहे हैं। अभी सुचिता को मैंने बोला था, तभी के तभी तुम्हें समझाई ये चीज, क्यों नहीं सुन रहे हो तुम, और वीडियो भी ऑफ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो इस चीज को। मेरे को पता नहीं कब समझोगे तुम इस चीज को। मैं डांटूंगा फिर भी नहीं समझ रहे हो, प्यार से बोल रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हो, फ्रेंडली अप्रोच से ही स्टार्ट किया था मैंने शुरुआत में, फिर भी नहीं समझ रहे हो। आप मुझे धोखा दे रहे हो एज अ स्टूडेंट बाय नॉट फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आई डोंट नो व्हेन यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू दीज थिंग्स। दोबारा से वही चीज रिपीट करनी पड़ी है जहां मैं आपको 3 चीजें और पढ़ा पाता। वो एक बहुत बड़ा इशू है। अब क्लास में जब तक आपका नाम नहीं लूंगा आप ध्यान नहीं दोगे, तो मतलब पूरा क्लास में आपका नाम लिया तो आप ध्यान नहीं दोगे, ये बहुत गलत चीज है। आप पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, या आप खुद को पनिश कर रहे हो या आप मुझे पनिश कर रहे हो, या यू आर जस्ट लॉस्ट। बट यू, इट्स अबाउट टाइम यू फिक्स दिस, अदरवाइज इट विल बी टू लेट एंड यू विल बी स्ट्रगलिंग अगेन, विच नोबडी वांट्स। जब भी फीट पर नॉटिकल माइल में आरओडी चाहिए आपको, रेट ऑफ डिसेंट फीट पर नॉटिकल माइल, हर नॉटिकल माइल में कितना फीट आपको डिसेंड करना है, रेट ऑफ डिसेंट एज पर फीट पर नॉटिकल माइल। डू अंडरस्टैंड दिस यूनिट? फीट पर नॉटिकल माइल, यस। एवरी नॉटिकल माइल कितना फीट आपका ड्रॉप होगा। टू फाइंड दैट आरओडी फीट पर नॉटिकल माइल, द फॉर्मूला इज सिंपल। द फॉर्मूला इज ग्लाइड स्लोप इनटू 100, नो मैटर व्हाट द ग्लाइड स्लोप इज। इतनी बड़ी चीज अभी बताइए, यू आर नॉट इवन बॉदर टू लिसन। आप रिकॉर्ड क्या करोगे और लिख के याद क्या करोगे? और ये चीज है जो पढ़ाई जा चुकी है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा वो है, वो भी याद नहीं है, जो बताया वो भी याद नहीं है, जो बता रहे हैं वो भी नहीं सुना है, तो कब पढ़ोगे फिर? 4 लेवल पे आपको पढ़ा रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी तो छोड़ ही दो। चौथे लेवल पे भी आप नहीं सुन रहे हो, तो कैसे सुनाऊं मैं आपको फिर? तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा, वो पॉइंट लिख लो। टू फाइंड रेट ऑफ डिसेंट for per nautical mile per feet, for feet per nautical mile, the answer is simple. Glide slope into 100 will give me ROD in feet per nautical mile. लिख लो, और उसके हिसाब से एक तो सोल्यूशन मिल गई आपको। अब इसको याद करो, बोला हाँ सर मैं समझ गया हूँ। क्या समझे हो? तो ROD फीट पर नॉटिकल माइल, ग्लाइड स्लोप इंटू 100 होता है, नो मैटर व्हाट द ग्लाइड स्लोप इज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? 100 इंटू जी। 100 यस 100 सर। इज द की एलिमेंट, दैट्स इट। 120। और उसके बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा फिर, अगर है तो। ये यस चीज सर। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, याद रखो। सुनो पहले चीजों को, सुन नहीं रहे, अटेंशन नहीं है। मेरे को लग रहा है वीडियो ऑफ है, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग विद द ऑनलाइन सेशन। आया को तो ऐसा डर लग रहा है कि आप पता नहीं कुछ दो चीजें कर रहे हो एक साथ में, हमेशा ऐसे ही लग रहा है। बिकॉज इसके अलावा आप क्या ही करोगे, क्यों नहीं सुनोगे? यू आर हियर टू स्टडी। आई डोंट नो, आई जस्ट थिंक दैट यू आर मल्टीटास्किंग, और आई डोंट नो व्हाट। बट जो भी है फिक्स करो यार। मैं तो बोल बोल के, पूछ पूछ के, ट्रस्ट कर करके थक गया हूँ। आपके यहाँ से वो सब नहीं आ रहा है जो आना चाहिए, बट स्लाइड इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बट इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि
इतना मैं आपको पेस्टर करूँ एवरी डे. द पेस्टिंग शुड हैपन वंस और ट्वाइस एंड द चेंजेस शुड बी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग एल्स दैट यू डू. दैट्स द आइडिया. So please focus on this. Please be alert. और मैं क्लास में जो बोलता हूँ वो हर चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते हो तुम कैसे डिसाइड करते हो किस चीज पे ध्यान देना चाहिए किस पे नहीं ध्यान देना चाहिए? कौन सिखाया ये तुम्हें कि सिलेक्टिव सुनना बंद करना है मुझे? और सुनते क्यों नहीं हो सारी चीजें क्लास में? तुम्हें पता है दिल्ली के और भी स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे घर के स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़े घर के स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहीं भी जा सकते हैं पढ़ने को. वो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मेरे पास. कितना छोटा इंसान हूँ मैं. क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि हमने ध्यान दिया आप जो भी बोलते हो हर चीज इंपॉर्टेंट है सर, एक चीज नहीं मिस कर सकता है. So we have to be very alert because whenever you're talking casually, also you're talking something that is important. तुम भी तो वहां का ही पानी पीते हो ना. तुम क्यों नहीं समझते हो ये चीज? उनमें तुम में कुछ फर्क नहीं है. मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर बैकग्राउंड, विद देयर फैमिली, विद देयर अपब्रिंगिंग. आई माइट बी रॉन्ग, राइट? बट माय ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन. इफ यू वोंट यूज इट, इट विल नॉट वर्क फॉर यू. कोच जैसे सिखा रहे हो वैसे नहीं सीखोगे तो क्या सीखोगे फिर? आप बताओ क्यों नहीं सुनते हो हर एक चीज? और अभी कितनी चीजें सुन रहे हो कितनी चीजें नहीं सुन रहे हो? कैसे पता चलेगा मुझे? मेरे लिए तो यू आर जस्ट अ ब्लैक पीस ऑफ पेपर. आई डोंट नो इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर नॉट listening. लर्निंग, इफ यू आर सिटिंग स्लीपिंग. आप बेड पे बैठे हो जूम लगा के, हमको क्या ही पता. आप बीच बीच में झपकियां ले रहे हो. आप किसी फ्रेंड के साथ कॉफी पी रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो सकता है आप किसी के साथ नहीं गेम नहीं खेल सर. रहे हो इसलिए मेरी बात नहीं सुनी. जब चैतन्य बोलूंगा तभी आप मेरे को सुनाओगे. कुछ भी हो सकता है. मैं थक गया हूँ सोच सोच के क्या हो सकता है. बिकॉज तुम क्या कर रहे हो तुम बताओगे तो नहीं. तुम्हारी बात पे पूरा भरोसा भी नहीं कर सकता मैं. बिकॉज जनरली नहीं सर, I'm sitting मैं नहीं मान सकता with उस my. बात को. द ओनली वे आई गेट टू नो इज व्हेन यू गिव मी व्हाट आई रिक्वेस्ट, बिकॉज आई एम टीचिंग यू दैट वे. तो बच्चे जो लोग ने 15 दिया है कोई इशू नहीं है. सब बैठ के चिल कर रहे हैं, सब आराम से अपना काम में लग गए हैं अभी. उनको कुछ नहीं है. 15-15 जिनको आए उनको पता है कल डायरेक्ट लाइव अटेंड करना है, रिवीजन की भी जरूरत है. मैं बता दूंगा कोई नहीं रिवाइज करेगा जिसको 15 आए हैं. अभी आपको करना पड़ेगा. आप नहीं कर पाओगे, आपका वही इश्यू होगा मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं हो रही है. फिर कल क्लास में सेम इश्यू होंगे, सेम टेस्ट में सेम इश्यू होंगे, फिर तुम चिढ़ जाओगे, फिर तुम वापस गुस्सा होगे बैठ जाओगे. उससे आंसर नहीं मिलेगा, उससे पढ़ाई पूरी नहीं होगी. तो प्रॉब्लम क्या है? अभी भी मैं टाइम दे रहा हूँ तुम्हें. दोबारा से प्रॉब्लम्स बार बार आएंगे तो फिर मैंने जो कल बोला वो एक्चुअली करना पड़ेगा. क्लास में नहीं बिठाने दूंगा. और वो कितना बुरा लगता है. सुन नहीं रहा हूँ. ठीक है, अब ये एक चीज पे बात हो रही है अभी बस. सुनना है सब कुछ चैतन्य. नहीं समझ में आया या मिस कर दिया तो सर प्लीज दोबारा बोलो ना मैंने नहीं सुना. आपको तो पता है मैं आधी चीजें नहीं सुनता हूँ. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव देन. अरे चैतन्य मुझे पता है तो आधी चीजें नहीं सुन रहा है, मैं दोबारा से बोलता हूँ. मेक श्योर जब दोबारा बोल रहा हूँ तब तो सुन लो. तुम्हारा फायदा होना चाहिए. नहीं सर सब ठीक है, ऑल क्लियर, बट परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है. तुक्के लग रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे हैं, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सर की आधी बातें मैं सुन ही नहीं रहा हूँ. सर कब क्या सिखा के गए, कब क्या सिखा के नहीं. तुम तो हमेशा बोलोगे सिलेबस हुआ नहीं है. बट व्हाट इफ द सिलेबस इज डन बट यू हैव मिस्ड थिंग्स बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. आई डोंट नो व्हाट दे आर. पहले 2 डिवाइस का था, फिर नेटवर्क का था, फिर फोन का था. मॉम ने भी बोला कि नेक्स्ट टाइम से इश्यू नहीं होगा, वीडियो ऑन हो जाएगा. वो हुआ ही नहीं. और मैंने एक बार भी कुछ बोला नहीं आप लोगों को बिकॉज मैं समझता हूँ कोई मजबूरी होगी. लोग बाकी लोगों ने प्रूव किया यार. And one of our Muslim students have turned their videos on to maintain that decorum of studies at least. Even though when we know that उनका तो सबसे ज्यादा issues होता है कुछ families में. Girls are doing that because girl privacy is much more important right in today's age compared to guys. कौन देता? कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता इतना फ्रीडम यार. इंस्ट्रक्टर्स नहीं वीडियो ऑन करते. बच्चों को तो सबको करना होता है. बड़ी बड़ी मीटिंग्स में विदाउट वीडियो कोई मीटिंग नहीं लेता. आई एम द ओनली पर्सन गिविंग यू सो मच ऑफ कंफर्ट एंड तुम उस सब कंफर्ट का गलत फायदा उठा रहे हो. एंड जब मैंने कंपलसरी कर दिया चीजें तो तुम फॉलो नहीं कर रहे हो वो चीजें. तो ये क्या है यार? ये तो रिबेल नेचर हो गया ना. क्यों रिबेल कर रहे हो भाई? क्यों रिबेल कर रहे हो? और ये रिबेलियन जनवरी से आ गया था तुम में. कुछ तो गड़बड़ हुआ है वहां पे.
जो अभी भी ये तुम्हारे असर दिख रहे हैं, अभी भी बोल रहा हूँ फिक्स करो उसको, नहीं तो अभी किताबें पढ़ लो 67 पे अटक जाओगे आप चाहते हो 77-80 पहुंचो ना, तो यू नीड दैट इम्प्रूवमेंट जो मैं बोल रहा हूँ। फिर बोलना मत अरे सर, सॉरी सर आप सही थे, उससे फायदा नहीं होगा दोनों का। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इवेंचुअली आई नो यू विल बिकम अ बेटर एविएटर, बट तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है ना। हम तो हैप्पी कि आप अब तक कहीं गए नहीं हो, कुछ गड़बड़ कर देते, बिकॉज ये एरियाज में बहुत मिस्टेक्स हैं। So please focus on your improvement and do not lie to yourself. You could lie to me, you could lie to everyone, you could lie to yourself also. But you don't have to lie to yourself. Don't be in delusion, denial. This age of 18, 19, 20, if you are denying, if you are in denial, then this persona becomes calcified in you and you become a negative person as you grow. And you'll always blame the other world and other people, and you'll never be happy and never be in harmony with the world around you. We don't want that for you. आप अपना ध्यान रखो, मेरे को चाहिए रिसर्च ऑन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस, एंड देन नेक्स्ट सेशन में डाउट्स है नहीं है, वेरीफाई हुआ नहीं हुआ बताना है, एंड आगे बढ़ना है। हर चीज़ सुननी है, क्वेश्चंस पे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मुझसे फिर डिस्कस करना है, आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है। और जब मैं बोल रहा हूँ नहीं चैतन्य मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है, तो बोलो सर ठीक है मुझे नहीं लग रहा, बट आई स्टिल थिंक अबाउट इट इवन वंस मोर। बस तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब तुम्हें इन चीजों पे ध्यान देना है, सी योर माइंड विल हेल्प यू रिकलेक्ट एवरीथिंग। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? सर। बोलो कुछ, क्या जवाब दोगे मेरे भाषण का इतने बड़े? Sir, I'll research my सॉरी questions व्हाट? which were wrong. सॉरी व्हाट? Sir, research my questions. सिंपल है, राइट क्वेश्चन है तुम्हारा गलत है, रिवर्स कैलकुलेट करो, समझ रहा है नहीं समझ रहा, अपनी क्या मिस्टेक थी फाइंड आउट करो। कल को कोई पूछता है, कल मैं पूछता हूँ अरे ये क्वेश्चन गलत क्यों था, यू शुड बी लाइक सर ये मेरी थी गलती, मैं ये फिक्स कर दिया, अब सही आंसर आ गया। अगर तुम ये नहीं बोल पाओगे तो आपके ऊपर ग्रिल किया जाएगा, आपको करवाया जाएगा वो चीज़, वो बिना किए आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। वो करना बहुत जरूरी है आपके बेनिफिट के लिए, समझ रहे हो ना? Yes, sir. चलो, well done on scoring 11, very happy. Maintain this and increase the score. Make sure you listen to everything that I say. Okay? 2 outcomes from this. बाकी टेस्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, टेक्स्ट का एक फीडबैक चाहिए टेस्ट का, व्हाट्सएप पे हाउ वाज योर फीडबैक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द टेस्ट, वो भी भेज देना, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. चलो, well done on passing. Okay. Next time top the class, okay? चलो, Promise. take care, bye.